Morning, and once again wonderful day outside. This year, because of no pollution or very little pollution, we have clear skies, very good breathing air, so exercise is good, children, and it's all very nice outside because of this clean, pure air. Even the rivers are cleaning out, we believe. Alright children, I hope you are all set for the online tests that are starting from tomorrow. Please remember, the online test can only and only be done through the mobile app, through the Honor College mobile app. We have already sent you the details of how to download this app on the website link. Now, this test is going to be done in two phases, of course. Classes nursery to 2, because they will be unable to do this kind of an online test, will be given proper tests like we do it. They will be uploaded on the website and app on the 1st of May 2020. Now, here is what the parents need to do. Please make them do the test properly in a proper copy, and also do the correction yourself, which means the parent will do the correction and the parent will give the marks, so that when the school reopens and we see the copies, the marks will be tabulated accordingly. इसलिए विनम्र निवेदन है पेरेंट्स के साथ में, जो कि पढ़े लिखे ना हो तो आस-पास पड़ोस के लोग में से किसी को भी कह दें कि अपने बच्चे का टेस्ट का काम चेक करके और नंबर दे करके दस्तखत और डेट ज़रूर डालें उसके ऊपर, और उसको एक कॉपी में मेंटेन करें. साथ ही साथ classes 3 to class 12, the test will be published as per schedule. There was a schedule given to you, children, from the 1st and the 5th of May. Proper schedule was given to you of what tests are going to be held on which date. That has already been uploaded on the website. Recheck it, and these tests are going to be uploaded date-wise on the website. On the app. They will be published on the app from midnight tonight, यानी कि आज रात 30 अप्रैल 12 बजे से लेकर के और कल रात 1 मई मिडनाइट तक 12 बजे तक, मतलब 24 घंटे के लिए ये आपके पास टेस्ट अवेलेबल है. दिन में किसी भी टाइम आप अपने मोबाइल पे ऐप पे जा करके और ये टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि अगर आपने एक बार अपना टेस्ट खोल दिया, once you have opened the test, then you have to finish it within the stipulated time. You cannot redo the test. ये नहीं कि आप 10 बार ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई नहीं कर सकते. आपका एक बार टेस्ट खुला तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा. इसकी विधि कि आपको टेस्ट पे कैसे जाना है सिंपल है. एक बार आप मोबाइल ऐप में गए, आपने अपना SR नंबर डाला, आप फर्स्ट पेज पर ही ऑनलाइन टेस्ट का आइकॉन देखेंगे, उसको दबाएंगे और आपका जो भी टेस्ट होगा वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा. ये पूरी प्रक्रिया बता दी गई है वेबसाइट के द्वारा. एक बार चेक कर लें हाउ टू use and download the mobile app. The test can only be given from the Honor College mobile app. Please make note of that. जो ऑनलाइन टेस्ट को स्टेप्स हैं डाउनलोड करने के, वो भी आपको वेबसाइट पे भेज दिए गए. So remember children, tonight 30th April from 12 o'clock midnight to tomorrow 1st May midnight, the test will be available for that particular date. So the date of 1st May, whatever tests are scheduled for that date, only those tests are going to be published. Likewise then on 2nd, on 3rd, 4th, 5th, every day for 5 days you will be having your tests. These tests are objective, so you can do them very quickly and the marks will be tabulated immediately and you will be able to see your marks. यानी कि ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. आप इमीडिएटली इन टेस्ट के नंबर आपको क्या मिले हैं वो आप देख पाएंगे. फॉर एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टैक्ट अर्शी फातिमा खान ऑन 9792761005 and Mr. Himanshu Srivastava on 6392984726. I hope you all have done your assignments. Now copies are available, children, in the market. You can pick up a copy, cover it nicely, and then inside you can write the assignment number. If you have done first and second assignment on paper, never mind. Third assignment you do like this, and
put the assignment subject and what is the date and do your assignments accordingly. This is an assignment for a class 3 student who has done the assignment from starting from assignment number 3. So like this you are going to do it. Put the assignment number, date, what subject, what is the assignment, question wise, and go forward like that, subject by subject, and finish one assignment and then move to the next assignment. Similarly, for the pre-primary classes, pre-nursery, nursery, please have a copy in which you will do your practice. 1 page of writing every day. That's it for now, children. Once again, be reminded, online tests starting from midnight 30th April to midnight of 5th April according to the schedule that has been sent to you. आपको एक शेड्यूल भेजा गया है वेबसाइट पे 1 तारीख से लेकर के 5 मई तक का. आप कृपया करके जिस दिन पे जो टेस्ट बताए गए हैं वो टेस्ट इस 24 घंटे के अंदर कर लें. यानी 1 तारीख के जितने टेस्ट हैं 1 तारीख को होंगे, कर सकते हैं आप. सेकंड को जो है वो सेकंड को, थर्ड को तो ऐसे तरीके से आपका चलेगा. और कृपया करके याद रखें ये टेस्ट रीडू नहीं हो सकता है. एक बार आपने खोल लिया तो आपको पूरा टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा. I hope children you all are safe, you all are home, taking care of your elders, all your assignments are done. Also regarding fees, the government has allowed the schools to open their offices to take the fees. फीस लेने के लिए ऑफिस खोलने की परमिशन हमको सरकार द्वारा मिल गई है. लेकिन जैसे ही वो हमको तारीख बता देंगे हम आपको मैसेज करेंगे और आप स्कूल में आकर के कैश एवं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अपनी फीस दे पाएंगे. इसका आप इंतजार करें. तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट चिल्ड्रन. डू वेल एंड आई नो यू कैन डू वेल. स्टडी हार्ड एंड डू वेल. आज हर हाल में अपना ऐप डाउनलोड करें. हैव अ ग्रेट डे चिल्ड्रन. थैंक यू वेरी मच.